Hello friends, I welcome you all to my channel EDUCATJET. Today I have come up with a very important topic, that is difference between short and long vowel sounds. जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 5 vowels are A, E, I, O, U. So my dear friends, अगर अभी तक आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि टोटल 26 इंग्लिश लेटर फैमिली में से कितने लेटर वावल्स होते हैं और कितने लेटर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद प्लीज आप ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट वावल साउंड। So before starting, let's have a look on short vowel sounds rules. First, when a vowel makes the phonetic sound of a particular letter, then it is a short sound. So it is saying, जब भी किसी letter का phonetic sound आपको सुनाई दे, तो उसको short sound कहते हैं. Second rule, when a word has only one vowel and ends with a consonant, then again आपकी short vowel sound आती है जो कि phonetic sound होती है। तो मैंने phonetic sound पे भी अपना एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको phonetic sounds क्लियर नहीं है। सो जैसे कि हमने कहा कि vowel A, E, I, O, U होते हैं तो phonetic sound से मेरा मतलब है A का साउंड क्या आएगा ए, E का साउंड क्या आएगा ए, I का साउंड क्या आएगा E. These are the phonetic sounds. हम इसमें short vowel में हमेशा phonetic sound सुनाई देगा. So let's see some example ताकि आपको concept और clear हो जाए. So let's start with the short vowel sound of A. The short vowel sound for A is A. A. So as written on the screen, it is K, A, T. Cat. तो हमारे दो रूल्स थे फ्रेंड्स। फर्स्ट रूल कि जो लेटर साउंड है वावल का वो फोनेटिक साउंड होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने बोला क ए ट, मैंने सी ए टी नहीं बोला, क ए टी, केट नहीं बोला मैंने, आई सेड क ए ट। ए का जो साउंड आ रहा है वो फोनेटिक साउंड आ रहा है। सेकेंड रूल मैंने आपको कहा था कि वर्ड में एक ही वावल आएगा और जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से एंड होगा। सो रूल नंबर 2 भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। एज यू कैन सी इट इज एंडिंग विद द कॉन्सोनेंट टी। सो रिपीट विद मी एवरीवन, इट इज क ए ट, कैट। ब ए ट, बैट। र ए ट, रैट। ह ए ट, hat. प ए ट, pat. व ए ट, vat. स ए ट, sat. क ए न, can. ब ए न, ban. र ए न, ran. म ए न, man. फ ए न, fan. प ए न, pan. न ए न, nan. तो आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड्स ए का साउंड क्या है शॉर्ट वावल साउंड, इट इज अ फोनेटिक साउंड ऑफ लेटर ए, दैट इज ए. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ शॉर्ट वावल साउंड ऑफ ई. द शॉर्ट वावल साउंड फॉर ई इज, जो कि ई लेटर का फोनेटिक साउंड है, दैट इज ए. ए. ज ए ट, जेट. प ए ट, pet. न ए ट, net. ल ए ट, let.
म ए ट मैट, ग ए ट गेट, व ए ट वेट, ट ए न टैन, ह ए न हैन, प ए न पैन, म ए न man. Now let's start with short vowel sound of I. So the short vowel sound for letter I is E. E. So let's read with me. It's B, E, N, bin. T, E, N, tin. V, E, N, win. F, E, N, fin. Now let's start with short vowel sound of O. The short vowel sound of O is O. O. H, O, P, hop. T, O, P, top. M, O, P, mop. P, O, P, pop. Now let's start with short vowel sound of U. The last vowel U. So the last vowel U की short vowel sound देखते हैं. So the short vowel sound of U is A. A. H, A, G, hug. T, A, G, tug. M, A, G, mug. P, A, G, pug. Now let's start with the long vowel sounds. So before starting, let's have a look on the rules of long vowel sound. First, when a word has two vowels walking together, the first vowel makes a long sound and the second vowels remain silent. Shh. वो क्या कह रहे हैं? It is saying जब भी दो वावल एक साथ आएंगे, फर्स्ट वावल का साउंड लॉन्ग हो जाएगा और सेकेंड वावल का साउंड साइलेंट हो जाएगा. Rule number 2. When a word ends with the letter E, when the word ends with the letter E, the first vowel makes a long sound. So, there are two rules. First, अगर वावल एक साथ आता है. सेकेंड रूल, जब जो आपका वर्ड है वो ई से एंड होता है लेकिन वावल एक साथ नहीं आता है. दोनों केसेस में आपके फर्स्ट वावल की साउंड लॉन्ग हो जाएगी और सेकेंड वावल की साउंड साइलेंट हो जाएगी. लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स नाउ. So first of all, let's start with the long vowel sound of A. As you can see on the slide, the word written is cake. तो यहाँ पे दो vowel हैं A and E. तो हमारा रूल नंबर 2 एप्लीकेबल है कि जब भी जो वर्ड है E से एंड होगा, फर्स्ट लेटर की साउंड लॉन्ग हो जाएगी और सेकेंड लेटर की साउंड, सेकेंड वावल लेटर की साउंड साइलेंट हो जाएगी. सो हाउ विल वी गोइंग टू प्रोनाउंस इट? इट्स क, ए, क. ए की साउंड लॉन्ग हो गई. सो जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स के जो साउंड होते हैं लॉन्ग वावल में, आपको वो साउंड सुनाई देगा. रिपीट विद मी. क, ए, क. ई जो हो गया वो साइलेंट हो गया और ए की साउंड लॉन्ग हो गई. क, ए, क, केक. स, ए,
M, same. L, A, N, lane. G, A, M, game. G, A, T, gate. T, A, P, tape. तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं. फर्स्ट लेटर की साउंड वावल, फर्स्ट वावल की साउंड लॉन्ग हो जाएगी, सेकेंड वावल की साउंड साइलेंट हो जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग वावल साउंड ऑफ ई. So rule number 1 is applicable on this word. Rule number 1 ये कहता था अगर दो वावल्स एक साथ आ जाएंगे तो फर्स्ट वावल की साउंड लॉन्ग हो जाएगी और सेकेंड वावल की साउंड साइलेंट हो जाएगी. तो as evident on the screen you can see the word is heat. Two vowels are coming together, that is E and A. So the sound of E will be a long sound, that is English letter sound E, and A sound will be silent. So let's speak with me. It is H, E, T, heat. T, R, E, tree. B, E, K, beak. L, E, F, leaf. B, E, T, beat. M, E, T, meat. Now let's start with the long vowel sound of I. B, I, K, bike. I की साउंड क्या आ रही है? Again letter sound आ रही है I, long sound, and E sound is silent. B, I, K, bike. L, I, M, lime. H, I, D, height. F, I, V, five. P, I, P, pipe. B, I, T, bite. Now let's start with long vowel sound of O. K, O, N, cone. So the long vowel sound of O is O, and the short vowel sound of O is O. K, O, N, cone. E is silent, O is long sound. K, O, K, coke. B, O, N, bone. H, O, L, hole. N, O, Z, nose. Now let's start with long vowel sound of U. So the long vowel sound for U is U. K, U, B, cube. M, U, L, mule. T, U, N, tune. J, U, N, June. T, U, B, tube. Now let's have a look on difference between short and long vowel sounds. It's very important. Please repeat with me. So मैं इसे nutshell में revise करा रही हूँ आपको. The short vowel sound for A, E, I, O, U are the sounds same as phonetic sound, that is
The short vowel sound for A is A. The short vowel sound for E is A. The short vowel sound for I is E. The short vowel sound for O is O. The short vowel sound for U is A. Now let's repeat the long vowel sound. The long vowel sounds for A is A. E is E. I is I. O is O. U is U. And the second vowel, if coming together, or the word ending with E, the sound of second vowel would be silent. Now let's have a look. This is a short and long vowel sound of vowel A. टेबल में मैंने दिखाया है short vowel sound of A and short vowel sound, long vowel sound of A. P, A, N, pan. अब इसी के आगे अगर E लग गया, 2 vowel साथ में आ गए, तो pronunciation completely change हो गया. Now pan has become pain. K, A, N, can. लॉन्ग वावल साउंड क्या हो गई? क ए न केन. र ए न रैन. लॉन्ग वावल साउंड इज र ए न. ए की साउंड लॉन्ग हो गई, आई की साउंड साइलेंट हो गई. रेन. ड ए म डैम. ड ए म डेम. ट app, tap. T, ape, tape. Now let's have a look on difference in the sound of short and long vowel of vowel E. N, a, t, net. N, e, t, neat. M, a, n, men. M, E, N, mean. L, A, D, lead. L, E, D, lead. B, A, D, bed. B, E, D, bead. S, A, T, set. S, E, T, seat. So I hope friends आपको ये difference clear हो रहा होगा. Now let's move to short and long vowel sound of I. R, E, P, rip. R, I, P, ripe. F, E, N, fin. F, I, N, fine. H, E, D, hid. H, I, D, hide. R, E, D, red. R, I, D, ride. B, E, T, bit. B, I, T, bite. Now let's have a look on short and long vowel sound of O. R, O, D, rod. R, O, D, road. G, O, T, got. G, O, T, goat. O, P, hop. H, O, P, hope. K, O, T, cot. K, O, T, coat. N, O, T, not. N, O, T, note. Now let's have a look on the last vowel sound of U. Short vowel sound is T, A, B, tub. Long vowel sound is T, U, B, tube. K, A, T, cut. K, U, T, cute. D,
d, dud, d, dude, k, b, cub, cube, cube, p, k, puck, puke, puke. So I hope friends आपको डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल क्लियर हो गया होगा इस टेबल की हेल्प से। आपको साउंड्स क्लियर हो गए होंगे, आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो keep liking, keep sharing and subscribing my channel EducatJet. Thank you so much.